हेलो नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद बेरीज। आज बैंक निफ्टी में जो फॉल आया है, आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल अगर आपने जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ जब भी मुझे कोई इंट्राडे सेटअप दिखे अगले दिन के लिए, वो मैं एवरी डे 7 o'clock को डालता हूँ। तो कल मैंने वो शॉर्ट्स या रील में यही बताया था कि अगर प्राइस क्लोजेस या क्लोज अबव दिस लेवल हम लोग लॉन्ग करेंगे, जो कि नहीं हुआ। और अगर किया भी रहेगा किसने लॉन्ग, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। तो अगर किसी ने किया है तो स्टॉप लॉस हिट, और नहीं किया है क्योंकि प्राइस तो इसके ऊपर गई नहीं है ना। तो ये मेरे लिए तो ट्रेड एक्टिव नहीं होता, बट दिस वाज समथिंग आई वाज लुकिंग ऑन। नो डाउट माय व्यू हैज गॉन रॉन्ग इफ somebody has taken a trade, but it was a very very small stop loss. So now if this setup is over, so I'm going to remove this zone also. I thought, or this gap I thought would act as a support, which it clearly did not. बहुत ही बढ़िया फॉल है ये। तो ये भी अभी जोन मेरे लिए इनवैलिड हो गया। अभी दिस इज समथिंग, ये लेवल्स तो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। अगर आप वीकली पे देखोगे ऑलरेडी मार्क्ड है। दिस इज द लोअर रेंज। मैं कल से रेंजेस की बात कर रहा था। दिस इज द लोअर रेंज द प्राइस हैज नाउ come to. So coming back to the early time frame now, what I can see is, if this if the range has to play out now, this should be the bot, like it should reverse from here. That is my prediction or analysis that I'm doing right now. Also, if you see if you go in a lower time frame, this is so there's a W pattern happening, है ना? If you see this, 1 minute, there is a W happening here. Okay, and this W, I will now, what will I do is, now if you see there's a triple bottom or a double bottom that you can call in 30 minutes also. If you see liquidity hunt, sort of hammer, not a hammer. In 60 minutes, still there is no hammer formed there. In 30 minutes, we can see there's a hammer form. So now the trade setup would be easy. If you see, this is a drop, base drop. So that's a supply zone. Let me mark this. So this is the supply zone which it clearly respected, and we saw a fall. So now the simple thing would be, an aggressive trader I would just long tomorrow if I get the price somewhere here. I would just long here with a stop loss. 1 minute, let me, yeah, with just like a very like a stop loss below the low. And now the targets I can really keep till here also. Still, this is a 2.72 RR trade, but when you're playing the ranges and somebody is a positional player, one can also look for this target. And this would be like, oh, this is not so viable. How can you get a trade which has a risk to reward of 1 is to 11? But ranges do offer such risk to rewards. This, no doubt, this will not go in the way or goes directly. It fell down. Always falls are faster and rises are slow. But in the coming week, this is pretty much the possibility that can happen. Please do keep in mind. One more, if the best scenario would be, let me remove this. The best scenario would be, we see one more liquidity hunt. Yeah, we go see 41,500 के नीचे एक बार वापस प्राइस जाए और एक 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक हैमर बना दे. That would be a real confirmation in Bank Nifty, and that is when I think you shouldn't leave. Like, just keep a very small stop loss, a 50-point stop loss, and let it, try and trail it as much as you can. And if you're a positional player, I think this will offer you the best risk to reward. So right now, no doubt, everybody after seeing this fall will be bearish. I don't make views just because the market has fallen so drastically. Always remember, I see markets as spring. If they compress a lot, they also bounce back in that manner. So अभी वही है सिंपल कि यहाँ पे अभी मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा. नो डाउट सब लोग बोलेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट है, फिलाना ढिंका. फॉर मी दिस हैज वर्कड, एंड आई एम अ रिवर्सल ट्रेडर. सो एंड दिस इज स्टिल इन रेंज. इफ यू सी इन वीकली ब्रॉडर देखोगे आप, तो ये अभी भी ये मदर कैंडल और ये जो लेवल है उसके आसपास ही है. सो टिल नाउ वी हैव नॉट ब्रीच. टिल द टाइम वी डोंट ब्रीच ये जो लेवल है ना, 41,600, लेट्स कीप अ राउंड फिगर है ना, और 41,600 के नीचे आई थिंक 41,500 आ रहा है. इफ यू सी प्रॉपर्ली, yeah, today it did do a liquidity hunt. If you see this, that's a liquidity hunt. So for me now, the level is a little low. That's a 41,500 level. Till the time we don't close below 41,500, I will not be bearish. This can purely be a range play that is going to happen. Okay, so यहाँ पे बैंक निफ्टी में we will look for long. I think I can keep this. If you want the trade, we can keep a stop loss, give a 100-point stop loss also, because we don't want to miss out the 200 300 point upside that we can get here. So you can,
41 400 पे रख दो. That's a 200 point stop loss. Still, if even if you have a modest target, it's still a 2.9 risk to reward trade. That is why I tell you guys, ranges offer the best risk to reward. And if somebody trails it really properly, generally the targets of a range are in, like, this can be the second target and this can be the third target. Yeah. So keep that in mind. Let's see how the price action now plays out. I can go terribly wrong if the price opens gap down and forms a hammer. Very good. That is also one scenario that we can look out for, because that will be like, ये अभी जो जो सारे शॉर्ट करके गए उनके स्टॉप, इधर जो भी शॉर्ट करेंगे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए. इतना बड़ा फॉल देख के बहुत सारे रिटेलर्स want to jump in, because now here, let's say आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस चलो ये तो भी रख दिया, पर ये रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है. चाहे में तो स्टॉप लॉस ये इतने बड़े फॉल के इसके ऊपर आना चाहिए, है ना. अभी यहाँ पे बिकॉज देर इज, ये अभी सेकंड टाइम ही आया, ये सेकंड टच है. सेकंड टचेस आर पावरफुल, थर्ड फोर्थ से वो वीक होते जाते हैं. तो ये लेवल को अभी सेकंड टाइम टेस्ट करना है. And as you can see, it's played out pretty well. So my view will be, I'm going to play the range on the upside if I find a reversal candle. Going on to Nifty. निफ्टी में मैंने तो कब से बोला है, मेरे लिए नो ट्रेड जोन है. जब तक ये लेवल अपसाइड अपसाइड तो अभी दिख रही नहीं नजदीक. अभी निफ्टी, इफ नाउ टुमारो द बेस्ट सिनेरियो वुड बी, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी अभी उसके सपोर्ट पे, तो निफ्टी एक बार इसका सपोर्ट टेस्ट कर दे जो है 17,780 के आसपास, और यहाँ पर हमें कोई हैमर मिल जाए या एक बुलिश एंगल के एंगल्फिंग मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा. अगर आप देखोगे मैंने जो जोन ड्रॉ करके रखा था, ये एक डिमांड जोन है, ये है रैली बेस रैली, है ना. तो ये अभी ट्रेंड लाइन में अभी के लिए निकल रहा है, ये अभी कोई मैं इंट्राडे में यूज कर रहा था. स्टिल इफ यू सी, है ना, इधर तो रेंज क्लियरली विजिबल है, ये सिंपल सा बॉक्स है इधर. And ranges have a tendency. Ranges can last for years, guys. Okay, don't underestimate the power of ranges. Big institutions make money only through ranges by selling options. So they want the markets to be ranging. So yeah, so don't underestimate ranges. 60 minutes maybe अगर आप देखोगे it's clear cut. So let's wait for the price to come near 17,700, 750 zones, and I will look to go long. कल मैंने एक स्टॉक बताया था मारुति, और मैंने मतलब एक मेरा प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन भी नहीं की मैंने ओवर द इयर्स आई हैव डेवलप्ड एन आई डिड टेल यू गाइस कि एक इससे बड़ी मदर कैंडल बनने के बाद जनरली एक बेसिंग कैंडल या एक छोटी इनसाइड कैंडल बनती है. अभी नो डाउट मैंने उसको बोला था कि इसके अंदर बनेगी, इधर वो नहीं बनी, पर ये भी अभी अगर इसके ऊपर भी अभी जो अपमूव आता है, ये दिस विल बिकम लाइक अ डिमांड जोन. आप समझ रहे हो, बिकॉज इतना बड़ा मूव आया तो लोग are also booking profit. No doubt, we would have liked if we would have got entry here. Still, I will not enter for long. I just wanted to show key this, once you start looking at the price and observing it, you will also start finding patterns. For me, I am gonna still wait for 8,547 or 8,550 levels to come to go long. And one more stock I think we were told was Reliance. Oh, Reliance has broke now. Now see again. If you see Reliance, as we are talking about ranges, I want to make it. You see how what a broader range this is. This is from 2,300 to 2,700. Imagine now. Imagine you enter here and you get to ride this whole range. That's a good RR, right? You just like put a 50, 60, 100 rupees stop loss. Still you get to ride 300 rupees. That's a 1:3 RR. So now, as I know how ranges do tend to play out, most probably Reliance will also test the lower range, which is this zone of 2300. यहाँ पे Reliance आएगा तो मैं surely long के setups के लिए ध्यान दूंगा. No doubt ranges obviously have to fail some of the other time, but see, if you see range shift, देखो मैंने एक range shift concept भी बोला था, ये देखो ये range shift है, यहाँ से range shift होके यहाँ गई है. Prices do tend to do that. यहाँ पे भी देखो अब जितना ढूंढोगे फटाफट मिलता है ranges. अब ये भी एक range थी, ये it shifted to here. ये देखो ये रेंज है ना, रेंज शिफ्ट्स हैपन एंड दिस इज अ वेरी गुड प्राइस कंसेप्ट. आप प्लीज देखिए ये तो बहुत ही बड़ी रेंज शिफ्ट है ना. यहाँ से अगर प्राइस वापस टूटती है तो ये रेंज में आ जाएगी. तो दिस इज समथिंग you guys should keep an eye while trading. Yeah, most probably we are gonna see 2300 in Reliance in the coming days, and that's when I will look for a long opportunity.
I think that's it for today. Thank you guys for watching. Please do subscribe to our YouTube channel. We also do post free intraday setups or free trades in our Telegram channel. Uh, Please share our channel with your friends and family who like finance or who are into trading. Thank you. Have a